जय जगन्नाथ सांगने मु स्वागत करुच्ची आ गोटे नया वीडियो। तो आज वीडियो आम देखा टॉपिक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, तार नीड कौन, पर्पस कौन, टाइप्स, टूल्स ए सब विषय रे डिटेल देखिए। प्रथम बुझ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कौन, कहीं तैयारी करागला, आउ यह कौन स्टोर करे। तो देख इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी को कहि परिबा गोटे डिजिटल कलेक्शन जोरा कौन करे, कैप्चर, प्रिजर्व एंड मेक एक्सेसिबल द इंटेलेक्चुअल आउटपुट। कौन सी भी इंस्टीट्यूशन रो इंटेलेक्चुअल आउटपुट को से एक्सेसिबल करे ऑफ ए पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब कौन कौन स्टोर करे सी से स्टोर करे रिसर्च पेपर, थेसिस, डिसर्टेशन, रिपोर्ट, डाटा सेट, कॉन्फ्रेंस पेपर, अदर स्कॉलरली मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशन, फैकल्टी, स्टाफ एंड स्टूडेंट। तो आम कहि परिबा गोटे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होची गोटे डिजिटल आर्काइव जो कौन करे, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और प्रिजर्व करे एंड प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू द स्कॉलरली एंड रिसर्च आउटपुट ऑफ ए इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी बा कम्युनिटी। तार बहुत गुडी डेफिनेशन भी अच्छी, डिफरेंट पर्सन देछन, लिंच, क्रो, प्रोसर। देखो लिंच कौन कहले, यूनिवर्सिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी इज अ सेट ऑफ सर्विस दैट ए यूनिवर्सिटी ऑफर to the member of its community for the management and dissemination of digital material created by institution and its community member। institution by institution रो कौन सी फैकल्टी ता स्टूडेंट एमन किसी स्कॉलरली आउटपुट पब्लिश करले ताको प्रिजर्व करे। देखिबा जदि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी करूछु तार आवश्यकता कौन, नीड कौन। देखो ए सब गुडा डिटेल देखिए। फर्स्ट तला प्रिजर्व research output, then information explosion, open access movement, visibility impact, institutional branding। तो ये पॉइंट गुड़ा डिटेल देखियो। प्रथम देखो प्रिजर्वेशन ऑफ रिसर्च आउटपुट, ये कौन करे, प्रोटेक्ट करे थेसिस, पेपर, रिपोर्ट्स, डाटा सेट फ्रॉम लॉस ड्यू टू द लिंक रॉट बा सर्वर चेंज हेले जो डाटा लॉस हो से ये प्रोटेक्ट करे। और इंस्टीट्यूशनल डिसोल्यूशन एटा हला फर्स्ट नीड। सेकंड कोइ परियो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, जेहेतु वास्ट अमाउंट ऑफ रिसर्च आउटपुट प्रोड्यूस होची गोटे इंस्टीट्यूशन रे गोटे सिस्टमैटिक डिजिटल रिपोजिटरी निहाती आवश्यक ताको ऑर्गेनाइज करिया पे आ प्रिजर्व करिया पे। नेक्स्ट हला ओपन एक्सेस मूवमेंट। देखो जेमिति वर्तमान कोन होची डिमांड बढ़ुची फ्री ग्लोबल एक्सेस पई due to open access movement to publicly funded research। the institutional repository key mechanism follow kochi for green open access। then asla visibility and impact। deposit in institutional repository receive more citation and downloads। तो जदि अधिक citation और downloads हला ते कौन हम रिसर्चर रो विजिबिलिटी बढ़िबो और इंस्टीट्यूशन रो मध्य विजिबिलिटी बढ़िबो। देन हला इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग, ए शोकेस करे गोटे इंस्टीट्यूशन रो इंटेलेक्चुअल आउटपुट केते अमाउंट रो स्कॉलरली रिसोर्स गुडा प्रोडक्शन होची, तोरा स्कॉलरली रेपुटेशन भी बढ़िबो इंस्टीट्यूशन रो और तार विजिबिलिटी भी बढ़िबो और बहुत ग्लोबल पार्टनर्स माने पार्टनरिंग करिवे रिसर्च करिया पे इंस्टीट्यूशन सहित। देन फंडर मैंडेट्स, फंडिंग एजेंसी जेमती यूजीसी हला, डीएसटी, आईसीएमआर, वेलकम ट्रस्ट, एनआईएच, दे रिक्वायर रिसर्च आउटपुट टू बी पब्लिकली एक्सेसिबल। द हेल्प क्वेश्चन। देन ओवरकमिंग जर्नल पेवल्स, जर्नल सब्सक्रिप्शन आर एक्सपेंसिव, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी allow author to self archive for free access। ओके कौन रहिला ग्रे लिटरेचर एक्सेस। ग्रे लिटरेचर आछो हमर टेक्निकल रिपोर्ट, वर्किंग पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स जोरा जर्नल रे पब्लिश हुएनी बट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी थ्रू रे आ रिगार्डिंग आमे सब अवेलेबल करे परिबा। देन नॉलेज शेयरिंग, प्रमोट शेयरिंग ऑफ नॉलेज विद इन एंड बियॉन्ड द इंस्टीट्यूशन, सपोर्ट रिसर्च कोलैबोरेशन। देन इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, libraries can direct users to institutional repository holdings instead of paying for expensive journal subscriptions। Purpose or objectives of institutional repository कौन हला, प्रथम हला कलेक्ट करियो
systematically gather all research outputs, journal article, thesis, data set, working paper, conference paper, books एसବୁ गुड़ाक कलेक्ट करियो। नेक्स्ट है ताको ऑर्गेनाइज करियो, क्लासिफाई करियो, डिस्क्राइब करियो मटेरियल्स गुड़ाक ता मेटाडाटा थ्रू रे डब्ल्यूएन कोर मेटाडाटा स्टैंडर्ड बा मार्क 21 जोड़ा इजी डिस्कवरी पे फॉलो करे। देन ताको प्रिजर्व करियो, लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रिजर्वेशन फॉर द रिसर्च कंटेंट। जेमिति देखो जहाँद्वारा कि ए प्रॉब्लम गुड़ा फेस करियो पड़ियो, जेमि फॉर्मेट माइग्रेशन हेले डाटा लॉस हेबा चांस रहउचे बा बिट्रॉट प्रिवेंशन पय सर्वर चेंज हेले तो सेते से मल्टीपल बैकअप नेबा को पड़ियो। देन डिसेमिनेट देखो प्रथमे कलेक्ट कला, देन ऑर्गेनाइज, देन प्रिजर्व, देन नॉलेज को डिसेमिनेट करा थ्रू ओपैक बा गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग, OAI-PMH हार्वेस्टिंग ए सब थ्रू रे। Then report, generate usage statistics, citation metrics and download counts for institutional reporting. Then compliance, help institution and researcher comply with funder open access mandate. Then interoperable माने share metadata with the global aggregators जेमिति open DOAR, ROAR, base using OAI-PMH. Then measure impact, track usage, altimetrics, demonstrate the value and research reach of research output, केते downloads होची, केते citation होची। Type of institutional repository, केते टाइप रो हमु देखियो मिले। प्रथम हैला नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जोड़ा सिंगल यूनिवर्सिटी बा ऑर्गेनाइजेशन। देन आसला डिसिप्लिनरी बा सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन जोड़ा स्टोर करे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। जिंदी एग्जांपल देछि आर्कशीट देला फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, देन पबमेड सेंट्रल, SSRN सोशल साइंस पय ने। देन आसला नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जिंदी शोध गंगा, डाट यूरोप, NDLI। देन ओपन एक्सेस इन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जोटा कि फ्रीली एक्सेसिबल, सब्सक्रिप्शन किसी दरकार नहीं, फ्री टू रीड, फ्री टू यूज। आर्कशीट, +1 ए सब गुड़ाक। देन आसला डार्क इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जोटा कि एक्सेस कंट्रोल्ड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पब्लिक एक्सेस नहीं, जेंदी पेटेंट डाटा, कॉन्फिडेंशियल रिसर्च, यूनिवर्सिटी HR रिकॉर्ड्स। देन आसला एग्रीगेटर और हार्वेस्टर जे कलेक्ट करे बहुत गुड़े जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी अच्छी से डाटा कलेक्ट करिकी गोटे जगह रे प्रोवाइड करे। हार्वेस्ट मेटाडाटा बा फेडरेटेड रिसर्च एग्जांपल है जो ओपन DOAR, ROAR, बेस, OAI स्टार। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होची गोटे सिंगल यूनिवर्सिटी बा ऑर्गेनाइजेशन पे ता निजर आउटपुट पे। एग्जांपल देखो डी स्पेस एट MIT, IIT बॉम्बे IR, शोध गंगा मल्टी इंस्टीट्यूशनल। ओके देन देखो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जोरा कवर करे स्पेसिफिक सब्जेक्ट जेंदी आर्कशीट रे फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, पबमेड रे बायोमेडिकल, SSRN रे सोशल साइंस। सो नेशनल बा कंट्री लेवल रिपोजिटरी रे शोध गंगा हला, डाट यूरोप जोड़ा थेसिस फाइन, देन ओपन DOAR नेशनल पोर्टल गुड़ा अछि। देन ओपन एक्सेस इन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जोड़ा प्रोवाइड करे फ्री अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल कंटेंट। आर्कशीट, +1, पबमेड सेंट्रल, DOAJ लिस्टेड रिपोजिटरी। देन रेस्ट्रिक्टेड बट डार्क IR जोड़ा कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डाटा गुड़ा स्टोर करे। आउ एम्बार्गो पब्लिकेशन जे एती टाइम पीरियड पर ही सेटा अवेलेबल है परिबो। देन हला एग्रीगेटर और हार्वेस्टर कलेक्ट मेटाडाटा फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी टू प्रोवाइड ए यूनिफाइड रिसर्च। एथिला किछिटा एग्जांपल अछि जोडा कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सब सब्जेक्ट कवर करे फ्रॉम ए सिंगल इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। एग्जांपल होछि जेंडो,
Sunra, then Fixer, Dryad, okay, then ETD, Electronic Thesis and Dissertation, ETD Repository India Sodhganga, ProQuest Dissertation. Then content type stored in an institutional repository. को type of content store हुए institutional repository. प्रथमे आसिला journal article preprint माने before peer review, post print after peer review, publisher permission नेगी ही share करा जाए. Then thesis and dissertation, PhD, MPhil, master dissertation, both mandatory or voluntary submission. Then asila conference paper presented at academic conference, preprint and final accepted version. Then technical report, research report, working paper, project report जोटा कि publish है journal रे. Then data set, raw research data supporting published papers for reproducibility and data sharing. Then asila book chapters, individual chapters from edited books where author retains the copyright. Book chapters भी एथिरे add कर. Then teaching materials रे आसियो lecture notes, course material, OER गुड़ाक. Then multimedia, audio, video lectures, images, maps, other non-text research output गुड़ा भी हमें एथिरे add कर परिबा. Next देखो institutional repository tools और softwares. institutional repository softwares कौन आम यूज करूँ. देखो फर्स्ट तो कौन DSpace, एटा मोस्ट कॉमनली यूज हुए DSpace टा. एटा डेवलप करथिला MIT और HP Labs. एटा ओपन सोर्स, ग्लोबली एटा बेसी यूज हुए. देन आसिला ePrints, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन डेवलप करथिला. देन Fedora Commons, ये भी ओपन सोर्स. देन आसिला Greenstone, यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो न्यूजीलैंड डेवलप करथिला. देन Invenio, एटा सनर. देन प्योर और सिम्प्लेक्टिक, एटा एल्जाइवर डिजिटल. देखो प्योर और सिम्प्लेक्टिक एटा एल्जाइवर, एटा प्रोप्राइटरी बा कमर्शियल सॉफ्टवेयर. जदि हमें देखिबा डिटेल रे गुडा को इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर कौन करे गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जद्वारा कि आमे डिफरेंट स्टेप्स गुडा को मैनेज करू. इंजेस्ट, मैनेज, प्रिजर्व, प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल रिसर्च आउटपुट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन. देखो मोस्टली इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होची कोन ओपन सोर्स, मोस्टली कॉमनली किसी प्रोप्राइटरी भी अछि, कॉमनली ओपन सोर्स आ जोटा कि सपोर्ट करे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लाइक OAI-PMH for metadata harvesting and Dublin core for metadata description. तो डिटेल कंपैरिजन जदि करबा हमें ई सॉफ्टवेयर गुडा को देखतार. प्रथम देला DSpace की डेवलप करथिले MIT और HP Labs. एटा ओपन सोर्स लाइसेंसिंग, मोस्ट वाइडली यूज्ड. एक यूज करें OAI-PMH Dublin core metadata. और ये हैंडल करे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, वर्कफ्लो मैनेजमेंट. देन देखो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर देखिए ePrints डेवलप करथिला यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन 2000 रे. ये भी ओपन सोर्स, जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग से जाए GPL. ए रिसर्च आउटपुट फोकस, स्ट्रॉन्ग रिसर्च, साइटेशन ट्रैकिंग, प्लगइन आर्किटेक्चर ये सब यूज करें. पावर्स RoMEO Registry, UK यूनिवर्सिटी गुडा को यूज करते मोस्टली. देन आसिला Fedora Commons, ये होची कॉर्नेल और वर्जीनिया टेक मिसिकी करथिले 2003 रे. ओपन सोर्स अपाची. ए फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे कॉम्प्लेक्स डिजिटल ऑब्जेक्ट्स गुडा को रिपोजिटरी रखे में RDF और लिंक डाटा. एटा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, हेटी ट्रस्ट एगुडा यूज करते. देन आसिला ग्रीनस्टोन जोटा कि डेवलप करथिला यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो न्यूजीलैंड 2000 रे. ये भी ओपन सोर्स GPL रे आसे. यूनेस्को प्रमोटेड मल्टीलिंगुअल CD/DVD distribution good for developing countries and low resource environment. Then asila Invenio दा एटा सनर
2002 रे डेवलप हेतिला ओपन सोर्स जीपीएल रे यूज बाय सन फॉर 1 मिलियन प्लस रिकॉर्ड्स जेनोडो runs on in venue link data support okay then देखो प्योर होची एल्सेवियर रा एटा गोटे कमर्शियल बा प्रोप्राइटरी माने पेड सर्विस टा then crisis system integrates with Scopus, World of Science, funder compliance, research profile. Okay, एटा मोस्टली बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज एमाने यूज करथंदी. Then Islandora, Island of PEI 2012, AV open source GPL combines Drupal CMS plus Fedora. Strong for cultural heritage, good multimedia handling. Canadian universities गुड़ाक ए सॉफ्टवेयर यूज करते मोस्टली. देन आसला संबीरा बा हाइड्रा. संबीरा कम्युनिटी डेवलप करछि ओपन सोर्स अपाचे. एक अंगरे फ्रेमवर्क built on Fedora used by Stanford, Cornell and Northwestern University for flexible metadata and workflow. एथिला किछटा एग्जांपल देखो एगुडार कम मन रखियो पड़ियो सॉफ्टवेयर नेम तार डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन द ऑर्गेनाइजेशन आ तार डेट गुडा को पचाय थे. किछ समय रे आरो लाइसेंसिंग विषय रे भी पचाय दै थे. ओके देन ओपन एक्सेस स्टैंडर्ड सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर. कोन कोन स्टैंडर्ड ओपन एक्सेस स्टैंडर्ड सपोर्ट करे देखो फर्स्ट आसला OAI-PMH ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग जेटा एनेबल करे मेटाडाटा हार्वेस्ट करिया पे. एग्रीगेटर्स लाइक ओपन DOAR, RoR, बेस, गूगल स्कॉलर. देन आसला डब्लिन कोर रो 15 टा मेटाडाटा एलिमेंट अछि जे यूज करे सब institutional repository software as minimum metadata set deposit. Then asila MEDS hochi metadata encoding and transmission standard. They use a packaging digital object with all their metadata for transfer and archiving. Then asila SWORD ta nuada eta मन रखियो पड़ेटी कारण आ ऊपर क्वेश्चन आसी परे. SWORD होची simple web service offering repository deposit. एक अंगरे automated deposit of content into multiple repositories through API. Then asla Creative Commons license used to specify how deposit content can be reused. देखो CC BY, CC BY-NC, CCO public domain आ ऊपर अलग वीडियो आनी भी Creative Commons ऊपर. Then asla handle system persistent identifier system. Each deposit item gets permanent URL that never breaks. Handle system. देखो आ रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर देछि आ ऊपर क्वेश्चन आस्ता है which software is promoted by UNESCO Greenstone. Then proprietary किए भितरो क्वेश्चन पचा था. Then sun रो in venue एगुडा नुआ गुडा को मन रखो कॉमन. ओके देन आस देखिबा नेक्स्ट आसिला RoAR रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी. देखो RoAR होची कोन तार फुल फॉर्म होची रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी. RoAR होची गोटे ग्लोबल रजिस्ट्री जे कि ट्रैक करे मॉनिटर करे ग्रोथ ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी वर्ल्ड वाइड. ओके so it was established to map and document the expanding landscape of open access repository and to provide statistics on the global open access movement. The global open access movement through रे then co repositories गुडा को contribute करछन open access ପାଇଁ growth कोन आछि ता रिगार्डिंग सब डाटा गुडा को कलेक्ट कर. तो RoAR collects metadata about repositories using OAI-PMH and produce charts showing repository growth over time. So it maintain करे University of Southampton UK. तार features गुडा कोन कोन अछि. फर्स्ट हला ग्लोबल रजिस्ट्री
tracks open access repositories from universities, research institutes and organizations worldwide. Globally track करे. Next आसला growth statistics. तो ये कौन करे चार्ट प्रोवाइड करे बा ग्राफ जोड़ा शो करे ग्रोथ ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी मूवमेंट बाय टाइम माने ईयर अनुसारे बा कंट्री अनुसारे सॉफ्टवेयर अनुसारे कोडार यूसेज बढ़िला को कंट्री रो ओपन एक्सेस रिपोजिटरी इंक्रीज हो जाइछि ईयर वाइज आसला सर्च एंड ब्राउज फीचर repositories can be searched by name country software type of content stored etc then as you global statistics charts and statistics on a global access repository group जोड़ा कहले माने कंट्री वाइज ईयर वाइज स्टोर करि परिबा आ स्टैटिस्टिक्स डाटा भी देखि परिबा नेक्स्ट आसिला OAI-PMH harvesting metadata about repositories is harvested automatically using OAI-PMH no manual submission required then asila software tracking with source institutional repository software like DSpace, ePrint, Greenstone are most widely used worldwide. Then repository metadata. Each listed repository source is name, URL, country, software, content type, ଆଉ डेट ऑफ एस्टाब्लिशमेंट सब गुड़ाक डाटा आमको देखिए एटा कौन कौन इंक्लूड करे लिस्ट सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन नेशनल आउ मल्टीडिसिप्लिनरी रिपोजिटरीज एटा इंपोर्टेंट फीचर फ्री एक्सेस it is completely freely accessible to anyone researchers librarian and policy makers देखो एटा गोटे इंपोर्टेंट कारण कंपैरिजन ना जानिया दरकार ROR आ ओपन DOAR विषय पढ़िबा आगो को बट कंपैरिजन टेबल टा टिके देखिनी देखो बोथ कोन ट्रैक करंदी ओपन एक्सेस रिपोजिटरी ROR भी ट्रैक करे ओपन DOAR भी ट्रैक करे बट विथ डिफरेंट एम्फासिस कौन डिफरेंसेस देखो आर बेसिक तो ना ही डिफरेंट अच्छी तापर पर भी बहुत गुडी जिनस डिफरेंट अच्छी देखो फर्स्ट हला ROR रो फुल फॉर्म कौन रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी ओपन DOAR होची डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज both same year found हेतला 2005 ROR मेंटेन करे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन UK ओपन DOAR यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम UK SHERPA services provide करे SHERPA RoMEO then URL ro.eprints.org sherpa.ac.uk देखो प्राइमरली ROR फोकस करे कौन क्वांटिटी ऊपर काउंट्स एंड ट्रैक्स ग्रोथ ऑफ रिपोजिटरीज बट ओपन DOAR फोकस करे क्वालिटी वेरीफाई एंड डॉक्यूमेंट्स पॉलिसीज then data collection automated OAI-PMH harvesting एथिरे कोन मैनुअल हार्वेस्टिंग कारण एमाने क्वालिटी ऊपर डिपेंड करछन ना तो प्रति जिंस चेक करा होची वेरीफाई करा होची then key output repository count growth charts software usage statistics एथिरे कोन repository policies content type metadata quality inclusion criteria less restriction any OAI-PMH compliant repository but एथिरे कोन अछि ओपन DOAR strict restrictions manual view review of each submission best use for tracking global institutional repository growth and software trend एटा कोन हे परिबो finding appropriate repository for depositing content so basically ये कोन होय परिया quality content दो तमको ए quantity बेसिक डिफरेंस रहला देन देखो ओपन DOAR विषय देखियो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी एटा होची क्वालिटी एश्योर डायरेक्टरी एंड पॉलिसी रजिस्ट्री फॉर द ओपन एक्सेस रिपोजिटरी ओपन DOAR कोन एश्योर करे क्वालिटी एश्योर करे ता सहित ऑथोरिटेटिव डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक एंड ओपन एक्सेस रिपोजिटरी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम UK SHERPA सर्विसेस तार बुझला
आर फीचर्स गुड़ा कौन आसियो क्वालिटी एश्योर्ड each repository is manually checked by SHERPA team before listing ensure accurate reliable information then policy documentation records repository policies on content type metadata requirement data policies and access conditions then search and browse features repository searchable by country, subject, software platform, language, type and content. A different category रे आमे सर्च करि परियो. Then OAI-PMH compliance माने tracks whether each repository is OAI-PMH compliant or not. Essential for metadata harvesting. यदि compliant थिबो तबे easily harvest हेइ परिबो. Then software statistics shows which institutional repository software Greenstone, DSpace, ePrint is mostly widely deployed. Then asila integration with SHERPA or RoMEO. देखो SHERPA and RoMEO regarding अलगा आसिबो डिटेल रे ये कौन करे लिंक्स पब्लिशर कॉपीराइट पॉलिसीज हेल्प्स अस हाउ टू नो वेयर दे कैन डिपोजिट तो सेठी देखो जेतेबेले आमे SHERPA RoMEO वेबसाइट को जिबा तो सेठी आमे डिफरेंट पब्लिशर को पॉलिसी गुडा विषय भी देखि परिया कि ओपन एक्सेस रे प्रोवाइड करे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस अछि ग्रीन एक्सेस गोल्ड एक्सेस आ तांगर पॉलिसीज कोन एफएसी चार्ज करूचंती कि नाही ए सब रिगार्डिंग हमें सब डिटेल देखि परिबा फंडर्स रिसर्च फंडर्स यूज ओपन DOAR to verify that institution have compliant open access repository then API access provide programmatic access through API integration with the other library system. Then global coverage, repositories from over 100 countries are listed and documented. Free public access, no charge to search, use, freely available to researchers, librarians and policymakers. How to use OpenDOAR? केमिति यूज करिवे? Okay. So first step रहिला go to v2.sherpa.ac.uk open DOAR search by country subject repository name बा software जोडा भी हमर रिक्वायरमेंट अछि हम से बेसिस से सर्च करि परिबा त हमें कोन से रिपोजिटरी सिलेक्ट कले तार प्रोफाइल देखि परिबा कंटेंट पॉलिसीज व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च कैन बी डिपोजिटेड verify OAI-PMH compliance for harvesting capability link to SHERPA RoMEO for publisher copyright permission को पब्लिशर को परमिशन दियंती सेल्फ आर्काइविंग पे दियंती ना नहीं से सब गुड़ा यूज ऑफ एपीआई फॉर ऑटोमेटेड क्वेरिंग फ्रॉम लाइब्रेरी सिस्टम ये थिला डिफरेंट स्टेप्स गुड़ा को देन आर वर्किंग देखिवा रिपोजिटरी रजिस्टर्स सबमिट नेम यूआरएल इंस्टीट्यूशन सॉफ्टवेयर कंटेंट टाइप जेतेबेले आमे सबमिट करूछु रिपोजिटरी रजिस्टर माने यूआरएल हो इंस्टीट्यूशन सॉफ्टवेयर जहां भी कंटेंट देला परे देन आसीओ मैनुअल वेरिफिकेशन SHERPA टीम को करियो चेक करियो सबमिशन फॉर क्वालिटी देन पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड कंटेंट मेटाडाटा डाटा डिपोजिट पॉलिसी रिकॉर्ड ये सब गुडा चेक हो देन आको लिस्टिंग करा हो ओपन DOAR OAI-PMH चेक हे जिवो हार्वेस्टिंग कैपेबिलिटी वेरीफाई करा हो देन रेगुलर अपडेट आसीबो डायरेक्टरी नेक्स्ट पार्ट देखियो हमें देखो SHERPA RoMEO सर्विसेज बायडा को जिवो पब्लिशर कॉपीराइट एंड सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसी तो आरो SHERPA RoMEO रो SHERPA जो हमें देखिले बतन ओपन DOAR रे तारो पूरा फैमिली अछि देखो तार SHERPA RoMEO आसीबो पब्लिशर कॉपीराइट और सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसीज SHERPA जूलियट रिसर्च फंडर ओपन एक्सेस पॉलिसीज गुडा को देखि परियो देन ओपन DOAR डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी SHERPA फैक्ट फंडर एंड ऑथर कंप्लायंस टूल SHERPA लीप देखो SHERPA लीप हो जो पोर्टेबल स्टैंडर्ड ओके ये सब गुडा को जो अछि ए सब गुडा को कार के दोछि को के मेंटेन गोछि JISC
आ विषय डिटेल देखियो देखो शेरपा रोमियो होची कोन डाटाबेस ऑफ पब्लिशर कॉपीराइट एंड सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसीज फॉर एकेडमिक जर्नल्स तो से कौन सी भी रिसर्चर जदि पब्लिश करियो चाहूची से कौन करि परियो ए वेबसाइट जाकी चेक करि परियो से वेबसाइट शेरपा रोमियो एक्चुअली गोटे रिसर्चर को कहे जे को जर्नल बा को पब्लिशर जे एलो करे ऑथर मानन को सेल्फ आर्काइविंग करिया पे निज पेपर गुडा को ओपन एक्सेस रिपोजिटरी आ को वर्जन डा देखो आमे कोनसी भी आर्टिकल पब्लिश करूछु तो तार तीनटा वर्जन थाए गोटे हला प्री प्रिंट आ गोटे हला पोस्ट प्रिंट आ गोटे हला पब्लिशर पीडीएफ को पब्लिशर जर्नल एलो करे को वर्जन डा को सेल्फ आर्काइव करिया पे जेमि आमे गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे बा इंस्टीट्यूशन रे काम करछु तो मु मो पेपर पब्लिश करबी मु मोरो इंस्टीट्यूशन रे ओपन एक्सेस रिपोजिटरी फंडर पॉलिसी अनुसार मोस्टली सेल्फ आर्काइव सेठी रिपोजिटरी डिपोजिट करियो पड़े तो एडा गोटे एसेंशियल सोर्स फॉर ओपन एक्सेस कंप्लायंस तो किए एलो करूची किए करू नाही ए सब रिगार्डिंग डिटेल आमे ए वेबसाइट रे देखि परिबा तो देखो शेरपा रोमियो कौन अच्छी कलर कोडिंग सिस्टम अच्छी एटा मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर आर बेसिकली चारटा कलर अच्छी आ कौन कोडा इंडिकेट करछि सेटा एग्जाम रे भी आसे देखो आर कोडिंग देखो प्रथम है ग्रीन ग्रीन प्रोवाइड करे कौन प्री प्रिंट एंड पोस्ट प्रिंट और पब्लिशर पीडीएफ बोथ माने देखो प्री प्रिंट माने कोडा आछिबो देखो कलर कोडिंग देखिबा प्रथम एटा तम बुझनी प्री प्रिंट होची हमरो ऑथर्स मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर पीयर रिव्यू जतले हमें सबमिट करूछु जर्नल को पीयर रिव्यू प्रोसेस जाइनी बुझला सेही समय रे जो अछि सेटा होची प्री प्रिंट ताको वर्तमान पर्यंत रेफर करायनी कि एडिट करायनी जर्नल द्वारा देन पोस्ट प्रिंट हला ऑथर्स फाइनल एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट देखो पीयर रिव्यू रे कोन से माने किछि रेकमेंड करंती ठीक अछि कि करेक्शन करियर अछि कि किछि चेंजेस करियर अछि करी कि हमें सबमिट कला परे पीयर रिव्यू हे गला परे द कंटेंट सेम एज पब्लिश्ड माने एडा पोस्ट प्रिंट माने कंटेंट सेम अछि बट पब्लिशर रा फॉर्मेट रे से कंटेंट को रखा जाय पब्लिशर फॉर्मेटिंग करिन बट कंटेंट सेम तो एटा होची पोस्ट प्रिंट देन फाइनल आछि पब्लिशर पीडीएफ ऑफिशियल पब्लिशर वर्जन विथ द पब्लिशर फॉर्मेटिंग लोगो टाइप सेटिंग द पीडीएफ यू डाउनलोड फ्रॉम द जर्नल वेबसाइट एटा होची पब्लिशर पीडीएफ तो नेक्स्ट मूव कर दो एटा देखो एबे बुझी परियो तो ग्रीन रे आछियो प्री प्रिंट और पोस्ट प्रिंट और पब्लिशर पीडीएफ माने मोस्ट परमिसेबल होची ग्रीन प्रिंट और ग्रीन कोडिंग रा माने पीयर रिव्यू मैन्युस्क्रिप्ट फाइनल एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट ये सब गुडा को हमें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी डिपोजिट कर परियो आ केते पब्लिशर एलो भी करंदी जे ऑफिशियल पब्लिशर पीडीएफ को भी हमें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी डिपोजिट कर परियो देन आसिला ब्लू ब्लू होची पोस्ट प्रिंट ओनली नॉट प्री प्रिंट पोस्ट प्रिंट माने फाइनली ऑथर जो आर्टिकल टा एक्सेप्ट हला फाइनल एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट पीयर रिव्यू परे सेडो हमें कोन करै परियो आर्काइव करै परियो एलो करनी प्री प्रिंट बिफोर पीयर रिव्यू एलो करनी आ पब्लिशर पीडीएफ भी एलो करनी नेक्स्ट आसिला वेलो वेलो रे प्री प्रिंट ओनली नॉट पोस्ट प्रिंट ओनली प्री प्रिंट माने हमें बिफोर सबमिशन मैन्युस्क्रिप्ट जोडा थिबो सेडा ही हमें आर्काइव करै परियो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आ पोस्ट प्रिंट पब्लिशर प्रिंट एगुडा एलो नै देन आसिला व्हाइट व्हाइट टोटली आर्काइविंग नॉट परमिटेड मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड पब्लिशर does not allow self archiving of any version no version can be deposited in open access repository without specific permission बुझी परलो तो ये तीनटा भी बुझी जैथियो प्री प्रिंट रे कोडा कोडा आसे येलो आसे ग्रीन आसे देन पोस्ट प्रिंट ब्लू ग्रीन
एटा ओनली किए एलो करे ग्रीन सम केसेस रे स्पेशल केस रे जनरली तो एलो करंती ने फिर भी देखो आर बेसिक फीचर गुडा कोन शेरपा रोमियो रो पब्लिशर पॉलिसी डाटाबेस एथिरे कोन मोर देन 3000 प्लस पब्लिशर अछंती आउ 25000 प्लस जर्नल्स वर्ल्ड वाइड अछि तांगर पॉलिसीज गुडा का हम सेठी देखो डिफरेंट डिफरेंट जर्नल को आमे जेतले विजिट करिवा तांकर पॉलिसीज गुडा को देखिवा ताठो बेटर हमको रिक्वायरमेंट अनुसार आमे कलर कोडिंग रे हमर नीड अनुसार को जर्नल्स गुडा प्रोवाइड करछन्ती एठी आराम रे देखि परिबे देन आसला कलर कोडेड सिस्टम सिंपल ग्रीन ब्लू येलो व्हाइट can clearly communicate what self archiving is allowed then searchable by journal or publisher and direct search kari pariba by the journal title or publisher name तांकर सर्च करिके हमें सेमानकर आर्काइविंग पॉलिसीज जानि परिबा then embargo information जेंदी if publisher requires an embargo period before self archiving through टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस जो थाए सेटा को जाय एम्बार्गो पीरियड सेही पीरियड परे जेकी तमे तमरो मैन्युस्क्रिप्ट को सेल्फ आर्काइव करि परिबो को पब्लिशर रो केते एम्बार्गो पीरियड अछि कार 6 मंथ्स अछि 12 मंथ्स आफ्टर पब्लिकेशंस ओके देन एपीआई एक्सेस SHERPA API allow integration with repository software DSpace, ePrint for automated policy checking. Then asila link to OpenDOAR, cross link to OpenDOAR, jadwara ki repositories to show which repositories accept the content type. Then founder compliance, link to SHERPA Juliet. एथिरे हमें कौन चेक करि परिबा founder mandates alongside publisher policy both. आ गोटे फीचर है ये सब गुड़ा कौन फ्रीली अवेलेबल नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड ओपन एक्सेस टू ऑल रिसर्चर्स ग्लोबली देखो से जो सर्विसेज कथा होले शेरपा रोमियो तो देखिले पब्लिशर कॉपीराइट और सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसीज शेरपा जूलियट रे फंडर रिसर्च फंडर एंड ओपन एक्सेस पॉलिसीज फंडर रो रिक्वायरमेंट्स कौन देन OpenDOAR जो है कि क्वालिटी एसईओ डायरेक्टरी फॉर ओपन एक्सेस रिपोजिटरी वर्ल्ड वाइड देन आसला SHERPA फैक्ट फंडर एंड ऑथर कंप्लायंस टूल चेक्स इफ ए प्लान्ड पब्लिकेशन रूट कंप्लाइज विथ फंडर रिक्वायरमेंट्स फंडर रिक्वायरमेंट अनुसार को पब्लिकेशन अछि जे कि फॉलो करूछ देन SHERPA लीप 2A एटा होचे पोर्टेबल ई पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड जो मैनेजिंग आउ शेयर करियो रे रिसर्चर प्रोफाइल गुडा को आ तांका आउटपुट गुडा को हेल्पफुल बुझला देखो आमे आरो एग्जांपल नै परिया जेमदि हमर IRINS पोर्टल अछि जोड़ा एकेडमिक इंफॉर्मेशन दिए रिगार्डिंग द रिसर्चर डाटा माने कि रिसर्चर प्रोफाइल हमें देखि परिबा तांका रिसर्च आउटपुट्स देखि परिबा से टाइप रो SHERPA लीप 2A से पोर्टेबल ई पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड फॉर मैनेजिंग एंड शेयरिंग रिसर्चर प्रोफाइल एंड आउटपुट प्रोवाइड करे ओके एथिला बेसिक्स देन मूव करिया किछरा क्वेश्चंस गुडा को जोडा आसे एग्जाम रे देखो केते क्वेश्चन अछि जोडा कि आसीची ऑलरेडी आ केते आसीबार प्रोबेबल अछि बोली एथे रेड हिची फर्स्ट दला ROR स्टैंड फॉर रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज OpenDOAR इज मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम SHERPA सर्विसेज बा यदि JISC लिखा जाईची तो एटा भी करेक्ट हबो In SHERPA RoMEO, which color indicates both preprint postprint can be archived? Green. It is most permissible. White color means no archiving permitted.
Which institutional repository is most widely used globally? D space. किए डेवलप करथिले MIT और HLS 2002. SHERPA और RoMEO. RoMEO stands for देखो RoMEO होची Rights Metadata for Open Archive. Which institutional repository was developed by University of Waikato, New Zealand and promoted by UNESCO? एटा आसीची मोस्टली. ओके को सॉफ्टवेयर हबो सेटा हमरा ग्रीनस्टोन. South Ganga is maintained by InflibNet. South Ganga को हो जाए reservoir of thesis and dissertation. In SHERPA RoMEO, blue color means postprint only allowed. A preprint is defined as author's manuscript before peer review. SWORD in the context of institutional repository stand for simple web service offering repository deposit. Which type of open access involves depositing research in an institutional repository? Green open access. The primary difference between ROR and open DOR, देखो main difference है quality quantity. ROR quality, open DOR quantity. ePrint institutional repository software was developed at University of Southampton. Which SHERPA service information on research funder open access policies? SHERPA Juliet. Zendo, a research data repository runs on which institutional repository software? Invenio. Invenio किए डेवलप करछि CERN. ठीक है. OAI-PMH is used in institutional repository for metadata harvesting across repository. A postprint is author's final accepted manuscript after peer review. Which institutional repository was developed by Cornell Universities and Virginia Tech? Fedora Commons. SHERPA or RoMEO yellow color means yellow color कौन? Only preprint allowed. Krauss definition of institutional repository was given in which year? 2002. देखो ए टाइप तो पचारेनी बट 88 कर देछे. कारण देखो डेफिनेशन को ईयर रे देइथिले सेइटा बहुत डीप जाए. ए टाइप आसीवर डाउट अछि. फिर भी which of the following is a subject based institutional repository in the field of physics and computer science? एडा हवा हमरा आर्कसिव. ओके आर्कसिव को हम प्रोवाइड करें फिजिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में. ओपन DOR stands for Directory of Open Access Repositories. ROR is built using which repository software? ePrint. Which organization published the influential 2002 paper recommending institutional repositories for universities? Spark. The handle system in institutional repository is used for assigning persistent identifier to digital objects. Which of the following is not a part of SHERPA family? So ROR is separate. Lynch definition of institutional repository was given in which year? 2003. Which color in SHERPA RoMEO indicates that post-print archiving is allowed but not preprint? Blue. Base is an aggregator that harvests metadata from multiple institutional repository. Base stands for Bielefeld Academic Search Engine. Okay. So ए वीडियो रे एतिकी मैं आशा करछि वीडियोटी भल लागिथिबो. तो ए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु. Thank you and have a great day.